everyone, welcome back to your favorite channel Chem Visual. So student, आज आम नहीं आसी प्लस टू सेकेंड ईयर फिजिक्स रो सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि आपनकर एग्जाम रे निहाती आसीबो. चलंतु आलोचना करबा सेति मध्ये कोन कोन सब रहउची. क्वेश्चन 1 रे आपण देखि पातबे आपनकर रहउची डिफाइन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल. Derive an expression for electric field intensity at a point on the axial line and on position of an electric dipole. सेथिरे आपण फर्स्ट स्टेटमेंट रे लिखिबे आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल. तापरे आपण एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन सेटा आपण डिराइव करिवे. सेकंड क्वेश्चन आपनकर आछि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन बोथ साइड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सेथिरे इलेक्ट्रिक डाइपोल कोन सेटा लिखिबे a pair of equal and opposite charges separated by small distance is called an electric dipole. सेटा मन लिखिबे. तापरे होची कहिची कि expression for electric field intensity at point on the equatorial line both side on position of an electric dipole. सेथिरे मध्ये आपण सेटा को डिराइव करिवे बोथ साइड को. सेथिरे आपण बाहर करिवे Ex is equal to बीटा p divided by r square plus l square रो होल 3/2 सेटा आपण बाहर करिवे. नंबर 3 रे आपनकर आछि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. सेतिरे आपण गॉस लॉ कोन लिखिबे तो टोटल flux linked with a closed surface is equal to the 1 by epsilon naught time of the net charge closed within the surface. ताको कहजे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो आपण लिखिबे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल लाइन ऑफ फोर्स. तो सेतरे आपण फार्मूला लिखिबे q net divided by epsilon naught जोटा कि आपनकर होगा phi is equal to integration over e dot ds is equal to q net by epsilon naught. सेथिरे e होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, phi होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स, epsilon naught होची परमिटिविटी इन एयर, ds होची सरफेस एरिया एलिमेंट, q net होची टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस. तारपर आपनकर कहछि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. सेतरे आपण शीट तयारी करिवे एवं चार्ज कोटा कोठी लागिवो सेही सब करिकना आपण बाहर करिवे E is equal to sigma by 2 epsilon 0. नंबर 4 रे मध्ये स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक रे सेटा लिखिबे एवं एटी कहछि डिराइव कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ. सेतरे आपण बाहर करिवे F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q0 by r square. एटा आपण बाहर करिवे. नंबर 5 रे आपण कहछि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल यूजिंग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. सेथिरे आपण बाहर करबे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical cell ro outside of the cell, inside of the cell एवं on the surface of the cell से तीनोटी आपण बाहर करिवे. नंबर 6 रे आपनकर कहिछि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. सेतिरे आपण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन लिखिबे एवं तार फार्मूला लिखिबे. Electric potential at any point inside the field is defined as the work done per unit test charge in bringing it from infinity to that point against the field by the external agent. तो सेतरे आपण v by w by q लिखिबे तार फार्मूला एवं तापर कहिछि एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. सेतरे आपण बाहर करिवे vx कोन vx is equal to हमर होए बीटा p by r square minus l square. सेटा आपण बाहर करिवे एवं तार कहिछि फॉर आइडियल डाइपोल
तो से आप एल को नेग्लेक्ट करेंगे और आपंकर आंसर हम bx इज इक्वल टू बीटा p बाई आर स्क्वायर। नंबर 7 आपंकर आसछि डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। से आपण कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कौन लिखिबे सेटा होची अमाउंट ऑफ चार्ज टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट। सी इज इक्वल टू आपंकर हम क्यू बाय भी से आपंकर क्यू होची इलेक्ट्रिक चार्ज भी होची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको मागिए एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। से आपंकर सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के आपन को प्रूव करने को पड़ो से आपको मागिए। आपंकर आसछि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। से आप सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर एवं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से सब बाहर करेंगे तार सर्किट डायग्राम तैयारी करेंगे। आपड़ सीरीज कनेक्शन आपंकर बाहर 1 बाई सी एस इज इक्वल टू आपंकर हम 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। पैरेलल कैपेसिटर आपंकर हम Cp इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। यहाँ हम आपंकर पैरेलल रे से आपको प्रूव करने को पड़ो। नंबर 9 रे आपन को कहूँ स्टेट किरचॉफ्स लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क अप्लाई दिस लॉज ऑब्टेन द कंडीशन फॉर ए बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। से आप किरचॉफ्स लॉ कौन लिखिबे किरचॉफ्स लॉ होची समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 0 एवं आई इन इज इक्वल टू आई आउट। तापर लिखिबे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कौन तापर वेस्टर्न ब्रिज कौन तापर तार कंस्ट्रक्शन वर्किंग एवं कंक्लूजन लिखिबे। नंबर 10 आपंकर आसछि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कौन लिखिबे जे इज इक्वल टू आई बाई ए एन कैप लिखिबे कहीं करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। से आपंकर जे होची करंट डेंसिटी ए होची एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एन होची यूनिट वेक्टर आई होची इलेक्ट्रिक करंट एवं तार मध्य सर्किट डायग्राम तैयारी करेंगे जो आपंकर बैटरी लगी जे इज इक्वल टू सिग्मा ई ए फॉर्मूला बाहर करेंगे। यहाँ होची आपंकर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जोटा कि हमको ये क्वेश्चन रे मागी थिला। 11 होची स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ ड्रॉ ए नीट एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर करंट व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। से आपण ओम्स लॉ कौन लिखिबे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द कंडक्टर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एवं आई इज इक्वल टू आमर हुए 1 बाई आर v। तो v इज इक्वल टू आमर हम आई आर आमर रेजिस्टेंस एवं हम वेक्टर फॉर्म रे लिखले आमर हुए जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल रे कोन हबा आपण लिखिबे तार केस दीटा अछि सेटा मध्ये लिखिबे। नंबर 12 रे होची एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इफेक्ट ऑफ करंट होची इफेक्ट कोन सेटा आपण को बाहर करियो पड़ो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आरटी बाय जे होची आपनकर जूल कांस्टेंट। तापर आपनकर कहिची जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सेटा लिखिबे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू ए कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट is directly proportional to square of an electric current, resistance of conductor, time for which current flow सेटा लिखिबे h is directly proportional to I square r एवं t। obtain an expression for drift velocity of the charge carries in a conductor, establish relationship between electric current and drift velocity। से कौन से लिखिए ड्रिप वेलोसिटी आमर हुए vd इज इक्वल टू ई भी टर्क बाय एम एल जो थे कि आमर ई होजी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होजी पोटेंशियल डिफरेंस टर्क होजी रिलैक्सेशन टाइम एम होजी मास
एल हूँ लेंथ एवं तार डेरिवेशन करेंगे जो थी कि आप सर्किट डायग्राम निहाती तैयारी करेंगे एवं तापर आपणकर आंसर कौन है VD इज इक्वल टू ई भि टर्क बाई एम एल से लिखे एवं तार वेक्टर फॉर्म कौन लिखे तापर आपको कही रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी से आप लिखे आपंकर हम आई इज इक्वल टू एन ई ए भि सबस्क्रिप्ट डी 14 आपंकर व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल एक्सप्लेन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड इट्स एडवांटेज वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल हूँ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल आउ गोटे हूँ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल एथिरे आपण मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल कौन से डिराइव करेंगे एवं तार एडवांटेज लिखिए नंबर 15 आपंकर स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ apply it to derive an expression for the magnetic field at a distance from an infinity long straight current carrying conductor एथिरे आपण स्टेटमेंट लिखिए एम्पियर सर्किटल लॉ line integral of the magnetic field B around any closed circuit is equal to the mu naught times the total current I passing through this closed circuit सेटा लिखो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl is equal to आपनकर हुए mu 0 I एवं ताको प्रूव करेंगे पुणी ताको कही मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम एन इनफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी इज इक्वल टू आपणकर कौन बाहर से लिखे बी इज इक्वल टू आपणकर हम म्यू 0 आई बाय 2 पाई स्मॉल डी से आप एक्सप्रेस करेंगे क्वेश्चन आपणकर हूँ स्टेट बायोसावर्ट लॉ अप्लाई इट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड intensity at center of a circular current carrying coil से आप स्टेटमेंट लिखिए बायोसावर्ट लॉ रो magnetic field intensity at a point P due to a current carrying length element dl is directly proportional to current I length of the element एवं angle between dl and r inversely proportional to square of distance r of the observation point P from the current dB is directly proportional to I dl sin theta एवं inversely proportional to r square सीटा लिखिए हम dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square सीटा आपको प्रूव करने पड़ो एवं पुणी कही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल से ड्रॉ करेंगे एवं ताकू प्रूव करेंगे बी इज इक्वल टू आपंकर म्यू 0 एन आई बाई 2r नंबर 17 आपंकर हूँ with a neat diagram describe the construction and working of moving coil of galvanometer moving coil galvanometer कौन सीटा प्रथम लिखिए तापर तार प्रिंसिपल लिखिए एवं तार सर्किट डायग्राम तैयारी करेंगे एक्शन लिखिए तापर वर्किंग तापर थ्योरी आप मैथमेटिकल करेंगे थ्योरी रे ही आपनकर आंसर आसीजिवो आई इज इक्वल टू जी फाइ से आप जी हूँ आपंकर गाल्वानोमीटर कन्स्टांट से लिखिए नंबर 18 आपंकर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ताको फर्स्ट करेंगे तापर आप डेफिनेशन ऑफ एम्पियर लिखिए नंबर 19 आपंकर डायग्राम हाउ ए गाल्वानोमीटर कैन बी चेंज्ड into an emitter of a given range and a voltmeter of a given range. Conservation of galvanometer into emitter एवं conservation of galvanometer into voltmeter आपण बाहर करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन आमर आछि an AC EMF E is equal to 0 sin omega t is applied to a circuit containing inductance L only obtain the expression for current I in the circuit. Explain the phase relationship between E and I and show it graphically एवं से टाइप आहरी दुटा क्वेश्चन दिखाई या क्वेश्चन पढ़ले भी से आंसर लिखिए ये क्वेश्चन पढ़ले भी से आंसर लिखिए और ये पढ़ले भी से लिखिए से आप लिखिए AC circuit containing pure inductor or phase difference between E and I in pure inductive circuit से आप सर्किट डायग्राम तैयारी करेंगे
जो थे कि आप आई पास करेंगे एवं से आपणकर बाहर I is equal to I0 sin omega t minus pi by 2 डायग्राम मध्य तैयारी करेंगे आपणकर एप्सिलॉन एवं तले जीव आपणकर आई एवं प्योर इंडक्टिव सर्किट ईएमएफ लीड्स करंट विथ pi by 2 रेडियन से आपणकर कंक्लूजन रे लिखिबे क्वेश्चन आपणकर आछि एक्सप्लेन व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन एसी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेम टर्म ऑफ इट्स पीक वैल्यू से आपण आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कौन बाहर से लिखे आप आई आरएमएस इज इक्वल टू I0 divided by root 2 RMS value of AC is 1 by root 2 times of peak value of AC आपणकर आछि derive an expression for the mean value of an AC से आपण mean value of AC कौन लिखिबे कि आपणकर हबो IM is equal to minus 2 I0 by pi is equal to minus 0.637 I0 एवं कंक्लूजन लिखे मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ ऑफ ए साइकिल इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC नेक्स्ट आपणकर आछि डिराइव एन एक्सप्रेशन for current in a circuit containing an AC source in a series with a capacitor so graphically variation of current and EMF with time এই क्वेश्चन जहाँ आंसर लिखिबे এই क्वेश्चन मध्ये से आंसर लिखिबे आपण एटी ग्राफ मध्ये ड्रॉ करिवे एवं तार xc कोन बाहला सेटा लिखिबे xc इज इक्वल टू आपनकर हबो म्यू नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा c कैपेसिटिव रेजिस्टेंस नेक्स्ट आपनकर आछि डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर सो द वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस इन इट सेथिरे आपण ट्रांसफार्मर कोन लिखिबे एवं तार प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एवं थ्योरी लिखिबे आपण स्टेप अप ट्रांसफार्मर एवं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मध्ये लिखिबे के इज ग्रेटर देन 1 एवं के इज लेस देन 1 एटा होजी आपनकर सेट अप ट्रांसफार्मर एटा होजी स्टेप डाउन नेक्स्ट आपनकर आछि ड्रॉ एंड डिस्कस अबाउट ID curve of a transparent glass prism hence derive the formula for the RI of the material of the prism एटा आपनकर 2025 रो मध्ये आस्तला एथिरे आपण प्रिज्म रो फार्मूला कोन सेटा लिखिबे सेही तरह जो ग्राफ हो सेटा मध्ये तयारी करिवे एवं R इज इक्वल टू आपनकर होए a/2 एवं I इज इक्वल टू आपनकर होए del m plus a/2 एवं आपनकर प्रिज्म फार्मूला हुए mu is equal to sin a plus del m by 2 divided by sin a by 2 सेटा establish the relation among about distance u image distance v and focal length f for a concave mirror discuss how the size image vary with the position of image এই क्वेश्चन जहां आंसर एथरे मध्ये सेटा ही लिखिबे आपण मिरर फार्मूला लिखिबे 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f एवं तार कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसिंग रियल इमेज सेटा मध्ये तयारी करिवे एवं फार्मूला ऑफ ए कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म रियल इमेज एवं तार मैग्निफिकेशन मध्ये बाहर करिवे सेटा आपनकर हबो -v by u नेक्स्ट आपनकर आछि with a neat ray diagram show the image formation in a convex lens and establish relation among object distance image distance and focal length and hence find the magnification आमे जानछु लेंस फार्मूला हमर हुए 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f तापरे आपण डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला इन ए कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग रियल इमेज सेटा आपण तयारी करिवे एवं तार सेडी लेंस फार्मूला को यूज करिकी रियल इमेज केमती फॉर्म होची सेटा करिवे तापरे तार मैग्निफाइंग पावर बाहर करिवे जोटी का आपनकर हुए v by u m is equal to v by u नेक्स्ट आपनकर आछि with a neat ray diagram explain the working of a simple microscope expression for its magnifying power simple microscope कोन लिखिबे simple microscope is a convex lens of small focal length used to see the magnified image of small object ताकू कहै हमरो simple microscope it is also called magnifying glass सेटा लिख
least distance of distinct vision ର power m is equal to ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। when image is formed at infinity ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ। ଆସୁଛି deduce lens maker formula। ଲେନ୍ସ ମେକର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାର ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ତାର ଯାହା ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିବ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। ଆସୁଛି with a neat ray diagram explain the construction and working principle of a compound microscope obtain an expression for magnifying power। ସେଥିରେ ଆପଣ compound microscope କ'ଣ ତାର construction ତାର final image is formed at LDDV ଏବଂ ତାର principle magnifying power ସେଇଟା ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ତାର ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବାହାର କରିବେ। ତିଆରି କରିକି ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ନମ୍ବର 7 ରହୁଛି with a neat ray diagram give the principle and uses of an astronomical telescope। astronomical telescope କ'ଣ ଲେଖିବେ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାର ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ପାୱାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ when final image is formed at infinity ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ପାୱାର କ'ଣ ବାହାରିବ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। refraction at a spherical surface hence derive the lens maker formula for a double convex lens। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସାର୍କିଟ ବନେଇବେ ଏବଂ ସାର୍କିଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏବଂ condition for maximum for bright fringes condition for minima for dark fringes ସେଇଟା ନିହାତି କରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି discuss fusion principle prove the law of reflection of light using this principle। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି state fusion principle prove law refraction of light by using it। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି explain the phenomenon of diffraction of light at single slit and obtain an expression for linear width of central maximum। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି derive the characteristic of photoelectric effect at Einstein photoelectric equation and show how it explain the characteristic। photoelectric effect frame Einstein's photoelectric equation discuss how it gives the concept of threshold frequency। mental findings in connection with photoelectric effect establish Einstein equation for this effect and explain it। explain the characteristic of photoelectric effect discuss Einstein explanation for the same। Bohr's postulate for hydrogen atom derive an expression for the energy of the electron in its nth stationary of the orbit। An expression for the wave number of spectral line of hydrogen by using Bohr's atomic theory explain the spectral series of hydrogen atom। discuss Bohr's theory for hydrogen atom and hence explain the Balmer series। describe briefly Rutherford's scattering experiment what does it predict about structure of the atom। define the mass defect and binding energy of nucleus। discuss the features of the graph showing variation of average binding energy per nucleon with mass number। state the nature of nuclear force so that the density of nuclear matter is constant what is binding energy। conjunction diode